Good morning students. Today we continue our fifth chapter, heat. In last lecture we see that specific heat capacity denoted by C. In your textbook given some substances specific heat uh, given there, and this is given in calorie per gram degree Celsius. Now how to calculate the heat absorbed by an object? See, heat absorbed by an object is equal to mc delta T. mc delta T. M is mass, C means heat, specific heat, delta T temperature. And where m is the mass of the object, delta T is increase in the temperature of the object. mc delta T means what? M is mass of the object and delta T is the increase in the temperature of the object. Now heat lost or means heat given by an object. Heat lost means heat given by an object is also equal to mc delta T. Heat absorbed by object is also equal to mc delta T, and heat given by an object is also equal to mc delta T. Here delta T is decrease in temperature. Heat absorbed is equal to increase in temperature, and heat given out means given out by an object is equal to decrease in temperature. Delta T is equal to decrease in temperature. Okay, all of you understood? देखो जो हीट एब्सॉर्ब होती है तो भी हम लोग क्या करते हैं, हीट एब्सॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय एन फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी. एम इज व्हाट? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सी इज द specific heat, and delta T is increase in the temperature. Delta T is increase in the temperature. And also heat lost, heat given by an object is calculated by same formula mc delta T. mc delta T. But here heat lost by or given by an object is equal to m is the mass of the object and delta T is equal to decrease in temperature. Delta T is equal to decrease in temperature. Okay. Now see principle of heat exchange. Principle of heat exchange. Heat exchange होती है तो कैसे होती है देखो. If a system of two objects is isolated from the environment by keeping it in a resistant box, then no energy can be leave or leave on in the box or enter in the box. In this situation, heat energy lost by the hot object is equal to heat energy lost by the heat energy gained by that cold object. जब हम लोग एक any object is keeping in the resistant box by keeping by the environment, then what happen in this situation? See, मीन्स कोई भी कुछ कोई हीट बॉक्स में अंदर जाती भी नहीं है और बॉक्स से बाहर आती भी नहीं है. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट वो बॉक्स में रखा है उस ऑब्जेक्ट में हीट एनर्जी इज लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट. हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट. मीन्स दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं. इन दिस कोर्स टू ऑब्जेक्ट्स अटेंड द सेम टेम्परेचर. टू ऑब्जेक्ट्स अटेंड द सेम एनर्जी. जितना एनर्जी हॉट ऑब्जेक्ट लॉस्ट करता है उतना ही एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब करता है. मीन्स देयर इज अ equal amount of energy. There is a equal amount of energy in that box. Means in that situation objects attain the same temperature. Objects attain the same temperature. Now what is the sublimation? The phenomenon in which solid is directly converted to gaseous state without passing into liquid state. The phenomenon in which solid directly passes to the gaseous state without passing through the liquid state is known as the sublimation. For example, the camphor iodine. देखो कैम्फर, जब हम लोगों ने कैम्फर लिया, कैम्फर मीन्स कपूर, कैम्फर लिया तो वो ऐसे ही बाहर रखा या तो क्या होता है, या जला दिया, इट इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू
uh, gaseous state. It is not converted into liquid state. This phenomenon is known as the sublimation. This phenomenon is known as the sublimation. Same as the iodine crystal. आयोडीन का क्रिस्टल भी हम लोगों ने लिया तो क्या होता है, when it heated it is directly converted to gaseous state without passing through the liquid state. लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने की वजह से वो डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है. इसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन. नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस. प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट पे क्या, सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है ये देखना है हमें. एट ए गिवन प्रेशर a given solid melt at a fixed temperature. A change in pressure changes the melting point of a substance. In the case of solids which expand on melting and increase in the pressure raises the melting point of the solid. For example, lead and wax. Lead and wax. क्या होता है देखो, प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट, सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट पे इफेक्ट होता है. कैसे होता है, व्हेन at a given pressure, when a solid melts in a fixed temperature and there is a change in pressure, there is a change in pressure, also there is a change in melting point of that substance. There is a change in melting point of that substance when solid heated it expands. When solid heated it expands and also melting point increase of that solid substance under the pressure. Means pressure raises, when the pressure increases the substance also expands and melting point also increases. For example, lead and wax. Lead and wax. देखो वैक्स वो जो मुंह में वो हम लोग जो हीट करते तो क्या होता है, थोड़ा वो मेल्ट होने के स्टार्ट करता है, बट हम लोग हीटेड एक्सेस, we heated it more excess, then the melting point till it melts completely, the melting point also increases of that wax. Means pressure raises, means pressure increases, also the melting point increases. In the case of solids which contract on melting, an increase in pressure lowers the melting point of the solid. इसके उल्टा है, जब सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, देयर इज आल्सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, देयर इज आल्सो इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इट आल्सो लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड. जब हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर मतलब सॉलिड जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बट मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, बट प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस, फॉर एग्जांपल एंटीमनी एंड बिस्मथ. फॉर एग्जांपल एंटीमनी एंड बिस्मथ. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड. Effect of pressure on the boiling point of a liquid. The boiling point of a liquid depends on the pressure on its surface. The boiling point of a liquid depends on the pressure on its surface. And increase in pressure raises the boiling point, while decrease in pressure lowers the boiling point. लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उसके सरफेस पे डिपेंड होता है. जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, एंड वाइल वी डिक्रीज द प्रेशर लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट. प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. Okay, here we complete our this 5th chapter heat. If you have any doubt, you ask me. Take some questions on as a homework. First, what is sublimation? First question, what is sublimation? Give example.
What is the principle? Next question. What is the principle of heat exchange? What is the principle of heat exchange? What is the principle of heat exchange? Third, what is meant by specific heat capacity? What is meant by specific heat capacity? You read lesson and complete these 3 questions. 10th standard students, you complete your homework. If you not completed homework, you not getting internal marks. All of you remind it. Okay, thank you.